Assalamu alaikum. I am Dr. Ansari Fardana Waiduzama from Chemistry Department, JT Arts Science and Commerce College, मालेगांव. आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स SYBSc फिजिकल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट. The content of the today discussion is what is chemical kinetic, molecularity of the reaction, order of the reaction, rate of a reaction, factor affecting rate of the reaction, rate law, zero order reaction, characteristic of first order reaction. What is meant by chemical kinetic? The branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction and reaction mechanism is called as chemical kinetic. Branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction is called as chemical kinetics. In chemical kinetics, we deals with rate of only those reactions which occur with measurable rate, that means which are neither too fast nor too low. Molecularity of the reaction, it is denoted with the help of letter M. The molecularity of an elementary reaction is minimum number of molecule, atom or ion of the reactant required for the stoichiometric coefficient of the reactant in a chemical equation of the reaction. If only one reactant take a part, it is called as unimolecular reaction. If two reactants are take a part, it is called as bimolecular reaction. If three reactants are take a part, it is called as trimolecular reaction. The number of reactant involved during the course of reaction is called as its molecularity. For example, A reactant gives us the product. रिएक्टेंट एक ही है यहाँ पर और वो प्रोडक्ट दे रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. और इसकी मॉलिकुलरिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी. फॉर एग्जांपल Br गिव्स अस 2Br. एक रिएक्टेंट है इसलिए इसकी मॉलिकुलरिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी और ये कहलाएगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. एग्जांपल ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन A + B गिव्स अस प्रोडक्ट. जैसे A + B दो रिएक्टेंट जो है रिएक्ट होकर प्रोडक्ट दे रहे हैं. यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दो रिएक्टेंट का है, इसीलिए इसका मॉलिकुलरिटी क्या रहेगी? 2 रहेगी और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल A + B + C गिव्स अस द प्रोडक्ट. 3 रिएक्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसीलिए इसकी मॉलिकुलरिटी क्या रहेगी? 3 रहेगी और ये रिएक्शन कहलाएगी ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम whose concentration determine the rate of reaction. The order of reaction is given by whose concentration is determined whose concentration determine the rate of reaction is called as order of reaction. Or you can say that order of reaction is given by the total number of molecule or atom whose concentration determine the rate of reaction is called as order of reaction. Total number of molecule or atom whose concentration determine the rate of reaction is called as order of reaction. You will be better understood with the help of the example in a further step. First order reaction, it is defined as the in which the reaction rate determined by variation of one concentration term is called as first order reaction. रेट ऑफ रिएक्शन जब एक ही रिएक्टेंट की वजह से डिटरमाइन होगा तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट मीन्स रेट, इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ लेटर R. R is equal to Kc suffix A. A is the number of reactant.
और द रिएक्टेंट ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रही है तो वो कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। And second order reaction is defined as the one in which the two concentration term determine the rate of reaction is called as second order reaction. Third order reaction, the reaction is said to be third order. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहेगा यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K इज इक्वल टू के सी ए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहेगा R इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी। दो रिएक्टेंट concentration of the two reactants determine the rate of reaction, hence it is called as the second order reaction. एक ही जैसे दो रिएक्टेंट भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, इसीलिए R इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर यू कैन राइट इट, और यू कैन राइट R इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, the reaction is said to be third order if three concentration term determine its rate. Thus, the reaction is called as third order reaction. If its rate constant is given by rate constant K is given by the expression. K is a rate constant. Rate मतलब क्या? R. R is directly proportional to CA, एक concentration first order reaction. R is directly proportional to CA into CB, दो concentration मतलब second order reaction. R is directly proportional to CA into CB into CC, it is called as third order reaction. और द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो क्या आएगा, के आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के सी ए, आर इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी, आर इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी इंटू सी सी। आर इज इक्वल टू देखो सी ए इंटू सी बी, दो एक जैसा बी है इसीलिए सी बी स्क्वायर, दो एक जैसा ए है तो R इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर। अगर तीनों रिएक्टेंट एक जैसे हैं और तीन रिएक्टेंट है ए, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू के सी ए क्यूब। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन whose rate of the reaction is independent upon the concentration is called as zero order reaction. zero order reaction क्या है, जिसका रेट जो है वो concentration पर डिपेंड नहीं करता, it is said to be zero order reaction. तो देखो मॉलिकुलरिटी हमने देखा, अगर एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो बायोमॉलिकुलर रिएक्शन, तीन रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो ट्राइमॉलिकुलर रिएक्शन, और molecularity is equal to 1, molecularity is equal to 2, molecularity is equal to 3. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, अगर रेट जो है वो डिपेंड करता है एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर तो इट इज़ सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर तीन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो इट इज़ सेड टू बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। Rate of reaction. Rate of reaction is the rate at which concentration of the rate decreases, or alternatively the reaction at which concentration of the product increases. That means the change in concentration of any of the substance, reactant or product per unit time during the reaction is called as rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस, और द रिएक्शन एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, or that means change in concentration of any substance per unit time is increases or decreases. The rate can be here with the help of rate of reaction. Here rate can be written as dx upon dt, small d small x, dx upon small d small t dt,
और ये और किससे डेसिग्नेट होता है, स्मॉल डी सी अपॉन स्मॉल डी टी इज कॉल्ड एज द रेट। तो जैसे अभी इससे पहले हमने आर लिखा था, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, और आर की जगह क्या लिखेंगे हम, डी सी अपॉन डी टी। तो रेट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यू कैन राइट रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स अपॉन डी टी. Negative sign applies in the case of reactant whose concentration goes on decreasing with time, whereas positive sign applies in the case of the product whose concentration goes on increasing with time. Therefore, the unit becomes concentration की unit क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम डी एक्स अपॉन डी टी है, तो डी एक्स क्या है, एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स की जगह सी भी लिख सकते हैं, डी सी अपॉन डी टी। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर। टाइम या तो सेकंड होता है, या तो मिनट होता है, या तो आवर होता है, या तो डे होता है। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर डे। ओके, here there is a graphical representation of the rate of reaction. The rate of reaction, this first one indicate that the R is equal to minus dx upon dt. That means the reactant goes on increasing and product goes on reactant goes on decreasing and product goes on increasing with time. Second graph indicate both. The as time passes, the amount of product goes on increasing. As time passes, the amount of the product reactant goes on decreasing. तो जो ऊपर से नीचे ग्राफ आ रही है, वो ग्राफ को क्या कहेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस डी सी अपॉन डी टी। नीचे से ऊपर जो जा रही है प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर रहेगा प्लस डी एक्स अपॉन डी टी. Factor affecting rate of reaction. There are various factors which are affecting on rate of reaction. First one is the concentration of the reactant. Greater the concentration of reactant, faster the rate of reaction. Concentration अगर ज़्यादा रहेगा तो rate of reaction fast होगी. ये concentration of reactant. Temperature. The rate of reaction increases with increase of temperature. If we increase the temperature, rate of reaction increases. If we decrease the temperature, rate of reaction decreases. Presence of catalyst. All of you very well. Catalyst which doesn't take a part in the reaction but increases the rate of reaction. A catalyst generally increases the speed of reaction without itself being consumed in the reaction. अगर catalyst रहेगा, in the presence of catalyst, rate of reaction increases, whereas in the absence of catalyst, rate of reaction is uniform. जैसे चल रही है वैसे चलेगी. Surface area of the reactant. Greater the surface area of the reactant, the rate of reaction is more, whereas rate law. Rate law क्या बोल रहा है? Generally consider the reaction A plus B gives us the C. The rate is written as R is equal to K concentration of A into concentration of B. Rate की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dx upon dt is equal to K concentration of A into concentration of B. The overall reaction order can be found out by adding the exponent on the reactant in the rate law. Now consider the zero order reaction. ऐसी reaction जिसमें rate independent होता है concentration of reactant के, वो कहलाता है zero order reaction. Zero order reaction is one whose rate is independent upon the concentration. Suppose A gives rise the product. Rate can be written as dx upon dt is equal to K0. Or you can write rate minus dx upon dc. A से मिल रहा है क्या प्रोडक्ट भी, dx की जगह हम dc भी लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट क्या है हमारा A है, इसलिए dCA. अब माइनस क्यों है? क्योंकि टाइम पास हो रहा है तो क्या हो रहा है,
रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो रेट रहेगा वो निगेटिव रहेगा, माइनस dCA/dt इज इक्वल टू K0। The expression for rate constant is derived as follows. Now consider the expression. हमने क्या देखा, dx/dt is equal to K0. Slightly rearranging this equation, take this dt from this side to this side. So this equation becomes dx is equal to K0 into dt. Integrating both sides of the equation between the proper limit, dx between the limit 0 to x is equal to K0 between the limit 0 to t dt. Integration of x dx is x between the limit 0 to x is equal to K0. Integration of dt is t between the limit 0 to t. Now substituting the upper and lower limit, so this equation becomes x minus 0 is equal to K0 t minus 0. Therefore, this equation now becomes x is equal to K0 into t. Now take this t from this side to this side. So this equation may be written as K0 is equal to x upon t. That is the rate constant for zero order reaction. By considering the equation x is equal to K0 into t, अभी हमारा क्या आया था, यही इक्वेशन आई थी ना, K0 upon t. And by plotting the graph of x versus t, this straight line is obtained which is passing through the origin in this way. So slope is nothing but K0. It is the y is equal to mx plus c. c क्या है, यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रही है, इंटरसेप्ट 0 रहेगा, इसीलिए ये इक्वेशन किसके सिमिलर हुई, y is equal to mx. Now, the half-life period of zero-order reaction. Half-life period is defined as the time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial value. It is denoted by the symbol T suffix 1/2. So, from the previous equation, x is equal to K0 t. The half-life period में ये क्या हो जाएगा, T 1/2. It is T 1/2. Now, x में भी A/T. x जो है वो आधा रिएक्ट हुआ है, x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो आधा रिएक्ट हुआ है, मतलब क्या कि वो A/2 है, आधा रिएक्ट हुआ है, इसीलिए वो क्या रहेगा, यहाँ पर A/2 mole of the reactant gets consumed behind the A moles of A. Therefore unreacted, and this is called as x. तो x की जगह क्या रखेंगे हम, A/2 is equal to K0 t 1/2. So slightly rearranging this equation, take this t from this side to this side, this side, sorry, K0 from this side to this side. So this equation becomes T 1/2 is equal to A/2 K0. It is the equation for the half-life period of zero-order reaction. Examples of zero-order reaction: decomposition of hydrogen iodide ion at the gold surface. Gold acts as a catalyst. At high pressure, the rate of the reaction becomes zero-order. Photochemical combination of H2 and Cl2. Bromination of acetone in acid solution with respect to bromine. It is the zero-order reaction. Thank you for watching.